अरहम ओके हमने काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया आज से शुरू करना है हमने काइनेमेटिक्स गुड स्टूडेंट्स who submitted their test मैंने उनके टेस्ट रिटर्न कर दिए ठीक है सर तो अभी तो टेस्ट ऑफ और सर मेरे टेस्ट सब कह रहे हैं कि टेस्ट नहीं है और मैं ग्रुप में नहीं टेस्ट जल्दी से वापस आओ देखो जरा अभी all right we are going to start our new topic and that is called kinematics. Kinematics deals with the movement, motion. All right. So, लग रहा है कि हम थोड़ा पढ़ा नहीं ये वैसे मिक्स अप हुआ है बिल्कुल नहीं पढ़ा हमने अच्छा चलो कह दिए बेटा प्लीज क्लोज द डोर सो काइनेमेटिक्स इज आवर न्यू टॉपिक अभी हम इसको शुरू कर रहे हैं ताजा ऑलराइट अगर आपको मेजरमेंट्स बहुत अच्छा समझ नहीं भी आया इवन देन काइनेमेटिक्स पे जरा स्ट्रेस करिएगा ज्यादा गौर से समझिएगा इसको इट इज an important topic of physics. Kinematics deals with the movement or motion of any object. Okay? So when we say motion, what do you mean by motion? And what is the opposite of motion? Opposite of motion is rest. Okay? What is motion and what is rest? Good. What is motion or rest? All right. Other things that motion is constant movement and rest is remain at place. These are it. Okay. Motion is of moving object. What is rest? All right, stationary, not moving. Okay. People online, what do you think? Rest क्या होता है और motion क्या होता है? Rest करते हो? Yeah. So what is rest or motion? बोलना है बेटा मेरी क्लास में चुप नहीं रहना गलत ही बोलो लेकिन बोलो ठीक है क्लास में मिस्टेक्स करनी है हमने गड़बड़ बताना है ताकि हमें समझ में आए तो रेस्ट में ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होता है और मोशन में मूव कर रहा होता है गेस अच्छा गुड हो गया वेरी गुड शाबाश अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम अस्सलाम अमा हाउ आर यू अमा वी हैव जस्ट आई एम फाइन सर अल्हम्दुलिल्लाह भी हमने शुरू किया है ठीक है बेटा लेट्स सपोज मैं एक कार में बैठा हूँ गाड़ी के अंदर ऊबर के अंदर बैठा हूँ आई एम एट रेस्ट और आई एम इन मोशन सवाल अच्छा है You are at rest, the car is at motion. I am at rest. All right. ठीक है. Let's suppose the car is moving at a speed of 100 kilometers per hour. Canal road पे जा रही है speed of speed. Thank you. I am at rest or I am in motion. चलें जरूर चाहे से इंसान कभी भी नहीं है जिंदगी में. हाँ जी. मैं गाड़ी में बैठा हूँ and the car is moving with the speed of 100 kilometers per hour. I am inside that car. I am at rest or I am in motion. How many of you think I am in motion? Yes or no? अभी तो बता रहे हो तुम लोग अब क्या हो गया Says the car is in motion, but you are at rest. मैं अपनी बात कर रहा हूँ कार को छोड़ो तुम मेरा बताओ I'm at rest or I'm in motion? कुछ बच्चों ने कहा रेस्ट है गुड है रूपा रूपा ने कहा मोशन है रेस्ट
जो बच्चे कह रहे हैं रेस्ट, अगर मैं दरवाजा खोल के बाहर आ लूं तो क्या होएगा मेरे साथ? क्योंकि तुम लोग कह रहे थे ना मुझे सर आप रेस्ट में है, रेस्ट में निकला है बाहर, तो मैं रेस्ट में हूँ या मोशन में हूँ? Motion. जिस किस्म की मोशन आपने कही है हमारा, उससे तो वाकई मुझे लगता है बड़ी मोशन में। सो मोशन एंड रेस्ट दे आर समथिंग। अच्छा चलो और मैं आसान कर देता हूँ ताकि तुम लोग समझो। आप लोग इस वक्त बैठे हुए हो, सब लोग बैठे हुए हो ना, आप रेस्ट में हो या मोशन में हो? अगर मैं मून से आपको देखूं तो आप रेस्ट में हो या मोशन में हो? हिबा कह रही रेस्ट में, हैदर कह रहा है मोशन में। हो यार किधर तुम, किधर हो तुम लोग? कैसे हो रेस्ट में और कैसे हो मोशन? और राइट, एज अर्थ इज मूविंग तो हम भी मूव कर रहे हैं आपके साथ। तो हैदर थिंग्स कि इसलिए हम मोशन में हैं, राइट। और इस कमरे के हिसाब से हम रेस्ट, इट मींस रेस्ट एंड मोशन दे आर रिलेटिव टर्म्स, दे आर नॉट द, इसको कहते हैं ना स्पेसिफिक टर्म्स, वी हैव टू रिलेट देम। ये ऐसी स्टेट्स हैं, रेस्ट एंड मोशन दे आर स्टेट, स्टेट हालत है किसी की, उसकी स्टेट आजकल ठीक नहीं है, मेरा दूर ही रहे उसकी स्टेट, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, इधर रिलेटिव। किसके साथ रिलेटिव? विद सराउंडिंग्स। With surroundings. I am in car, I am at rest with respect to the things inside the car. But outside the car, I am in the state of motion. You are sitting here with respect to the surroundings, you are at rest. But with respect to the earth, you are in state of motion. So surroundings जो है ना, they play a vital role in this state. ठीक है? If what is it? If an object changes its state with respect to its surroundings, it is said to be in rest or motion. दोबारा से सुनो, जानते रहो यार तुम लोग, ये तो सो बड़ी जल्दी जाते हो। दोबारा से सुनो। If an object changes its place with respect to its surroundings, it is said to be in motion or at rest? Motion, because it's changing its place. ठीक है? So with respect to the surroundings, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, रेस्ट क्या होगी? In is not changing its place with respect to the surroundings. The object is said to be at rest. मोशन की आप खुद देखो, प्लेस के लिए पोजीशन का है, जरा और स्पेसिफिक हो, जरा और टेक्निकल वर्ड है, ठीक है? पोजीशन, आपका नाम कुछ कुछ समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा।
तो रेस्ट और मोशन हमने समझ लिया। चलो so when the object is changing its position with respect to its surroundings, it is said to be in state of motion. देख लो बेटा प्लीज, ये आपके वो नोट्स हैं जो अक्सर बच्चे कहते हैं सर आपने नोट्स नहीं दिए हैं, ये वो वाले नोट्स। नहीं कोई गड़बड़ है तो पूछ लो बेटा, नहीं समझ लिखा हुआ नहीं समझ आ रहा, कहीं कुछ स्पेलिंग्स में तो पूछ लो। और हो गया, अब आगे चले। रेस्ट ऑफ मोशन क्लियर है? शाबाश। अब हम बात करेंगे काइनेमैटिक्स में मोशन की। कितनी तरह की मोशन है, मूवमेंट्स कितनी तरह की होती है? We have three types of motion. कौन सी? ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, and rotatory motion. ट्रांसलेटरी मोशन कौन सी होती है? मोशन in a straight line. A person riding a bicycle or a motorcycle or a car moving on the road, वो कौन सी मोशन रहेगी? ट्रांसलेटरी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन ऑन द रोड, सीधी सी। ठीक है, बस इसका नाम ही मुश्किल है, बाकी वही है काम, ट्रांसलेटरी मोशन। ऑलराइट, सर्कुलर मोशन क्या होगी बेटा? You start going to the road, you translate to motion, straight line motion. Okay? Circular motion, motion in a circular path. Rotatory motion क्यों आएगी? When any object spins around its axis. Spinning around its axis. कौन स्पिन करता है? पंखा करता है कि नहीं करता? फैन, देखते हूँ कि तुमको कुछ बोलना समझो। अर्थ कौन सी मोशन शो कर रही है? अर्थ, when it is revolving around the sun, motion of earth. Circular. Okay, circular bus. Circular motion. Okay, circular motion. बस ही ट्रांसलेटरी है कि नहीं? नहीं, सर्कुलर है। और ये रोटेटरी मोशन, रोटेट भी कर रही, स्पिन कर रही। ओके, सर्कुलर मोशन ऑफ द अर्थ से क्या चेंजेस होती है?
Seasons, very good. Seasons. Seasons they change. What about rotatory motion? Day and night. Yes. ठीक हो गया बेटा? समझ आ रही है मोशन की तीनों टाइप्स? So we have translatory motion. I'm sure you got it. What is translatory? We have circular and we have rotatory. All right. Any questions? Easy, easy. Very good. No questions means you people are getting it. ठीक है? यार कोई ऐसी ऑब्जेक्ट के मोशन बताओ जिसमें तीनों मोड हो. People online. सर नजीर बता रहे थे कि all the intelligent students are placed online. तो बताओ यार फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो ये तीनों मोशन शो कर रहा हो. All right. How? Aruba, she thinks a car. All right. What are the circumstances? Wheels उसके circular motion या rotatory motion. Circular में और spin में फर्क है. Pendulum, sir. All right, pendulum. People they are thinking now and they are answering. Pankha, it is spinning around itself. Wheels, they spin around themselves. ठीक है? Pendulum, क्या कर रहा है? Circular motion, rotatory motion. जी अगर पेंडुलम में बनाओ, that's a good question and good answer as well. फातिमा, पेंडुलम कैसे मूव करते हैं? ऐसे ऐसे मूव करता है ना, राइट? और अगर हम ऊपर से देखें इसको, बिल्कुल ऊपर से ऐसे करके, तो ये ऐसे से मूव कर सकता है. क्या ये ऐसे मूव कर रहा होगा और सामने से लगेगा वाइब्रेट कर रहा है? ये कौन सी मोशन रहेगी? थैंक यू वेरी मच. ठीक है, एक सर्कल के गिर. ऑलराइट. सो वैसे मैं भी आजकल कोशिश कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट मिल जाए जो तीनों मोशन शो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भी नहीं मिला. आप लोग भी सोच रहे शायद तो मिल जाए. दो तो मिल जाती है, लेकिन तीसरी बिकॉज ट्रांसलेटरी एंड सर्कुलर दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर. ट्रांसलेटरी स्ट्रेट लाइन मोड, सर्कुलर गोल गोल घूमना. तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि सीधी की जगह गोल गोल. ऑलराइट. सो हो भी सकती है बट मुझे मिली नहीं. आप लोग भी थे. ओके. So this was the general introduction of the kinematics, motion, rest types of motion. Now we are going to dip into the details of motion. When we say motion, there are certain terminologies which are used for it. I'm just giving you the names of those terminologies. You know them very well. You are very familiar with them. We call them as distance, displacement, याद है ना? Then speed, then we have velocity and
Lastly, acceleration. Shabash. These are basic terminologies which are used in motion, kinematics. हम इनको one by one देखेंगे कि ये क्या है. ठीक है? We are going to start with distance. जी बेटा, कोई बताएगा मुझे what is distance? We have two places. Let's suppose A and B. A can be your home, and B is your academy or school. So, what is distance? All right. Shabash. Length between 2 points. और क्या हो सकता है? लेंथ के अलावा स्पेस हो सकती है, रीजन हो सकता है, बिटवीन 2 पॉइंट्स. सवाल मेरा ये है भाईजान, ये पॉइंट क्या चीज होती है? व्हाट इज, आपने 2 पॉइंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लाइन. लिख कर लो. इसका मतलब होता है एक लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं. ऐसे ही ना, लाइन इज मेड अप ऑफ पॉइंट्स, बट स्टिल व्हाट इज द पॉइंट? आपने ये तो बताया, वेरी गुड. आई एम हैप्पी कि आपको आइडिया है कि लाइन इज मेड अप ऑफ पॉइंट्स, या पॉइंट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइन. बट व्हाट इज पॉइंट इटसेल्फ? Point is a geometric shape. Point is a geometric shape which has no length, breadth, or height. It is that geometric shape which has no length, breadth, or height. It is that small. लेंथ के लिए भी 2 पॉइंट्स की जरूरत है, हाइट के लिए भी 2 पॉइंट्स की जरूरत है, ब्रेथ के लिए भी 2 पॉइंट्स की जरूरत है, मोर देन 1 पॉइंट. सो पॉइंट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट व्हिच हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट. गॉट इट? ये पॉइंट हम बार बार यूज करेंगे इसलिए. और सादिक ने जैसे कहा, इट इज द यूनिट, बेसिक चीज. इस पूरी बिल्डिंग का यूनिट क्या है जिससे ये बनी है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस बिल्डिंग? अ ब्रिक, a block. That is the unit, smallest piece. All right. इसी तरह से point भी smallest unit of a line. समझ आ रही है बात? Point कितना छोटा होगा? Point एक needle की tip से भी छोटा होगा. याद रहेगा? चलो, okay. So the space or length between 2 points, that is called distance. शाबाश. मैं इसको इजी, जैसे आप लोग ने कहा लेंथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स, उसी को कंसीडर करें. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? कौन बताएगा? एनी आइडिया डिस्प्लेसमेंट का? The shortest distance covered. उमर भाई शाबाश. डिस्प्लेस between 2 points. अब देखो, ये आपका घर था, ये स्कूल है. सर इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट. क्योंकि ये जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है स्ट्रेट लाइन में होती है. ठीक है, हमारे में इज इंसिस्टिंग कि ये लिखा जैसा. ओके, इन अ
straight line. गुड, थैंक यू वेरी मच अमार। लेकिन ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, इससे शॉर्टेस्ट लाइन से ही बनेगा, उसके अलावा नहीं बन सकते। बट ये वो भी डाल दूंगा। ओके, लेट्स सपोज ये आपका घर होम, स्ट्रीट होम, स्कूल जाने के लिए बाहर निकलो अपने फ्रेंड की स्ट्रीट में, फिर उसके साथ गप्पे लगाते हुए एक और स्ट्रीट आती है, वहां से इधर और फिर ये पश्चिम। ये क्या हुआ? डिस्टेंस। यस, दिस इज डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? कि आप अपने घर गेट की बजाय साथ वाली दीवार है वो तोड़ते हुए सीधा सामने वालों का घर तोड़ते हुए, स्कूल के बैक वॉल को तोड़ते हुए सीधा अपनी क्लास में स्ट्रेट। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेस। स्ट्रेट लाइन है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, ठीक है बेटा। तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेस। डिस्टेंस होता है एनी पाथ, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, कोई और डिफरेंस दोनों के बीच में? डिस्टेंस इज स्केलर, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस। Distance is scalar quantity and displacement is vector. Vectors की क्या खास चीज होती है? They got a direction. तो displacement की डायरेक्शन होगी। Look at its statement. उसमें आ रही है कहीं पे डायरेक्शन? लिखो बट। Yes. Shortest distance. ठीक है। Straight line. ये स्ट्रेट लाइन और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज एक्चुअली व्हाट अ डायरेक्शन कनेक्ट। यहां से आप किसी तरफ और जाओगे तो वो डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगी, डिस्टेंस बन जाएगी। ऑलराइट, अदरवाइज बोथ आर सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बोथ आर मेजर्ड इन एस आई। यूनिट क्या है दोनों का? मीटर। मीटर को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से। शाबाश, दोनों को मीटर्स में मेजर करते हैं। एस आई यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ इज मीटर्स। मोशन ऑफ एन एरोप्लेन, जब उसने टेक ऑफ कर लिया, स्टेबल हो गया, ऊपर जाके स्ट्रेट लाइन में होती है कि नहीं होती? वो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है? शाबाश, बहुत कम डिस्प्लेसमेंट होती है पर होती है। ट्रेन गोइंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है स्ट्रेट लाइन। बटरफ्लाई, फॉलिंग फेदर और अ पीस ऑफ पेपर, वो जो आप लोग जहाज उड़ाते रहते हैं एरोप्लेन, डिस्टेंस कवर करता है या डिस्प्लेसमेंट? ऐसे भाई तो भाई बोलते जा रहे हो, सोच के बोलो। इधर से एक बटरफ्लाई जा रही है या ऐसे हमने वो किया, एरोप्लेन फेंका यूं करके, या एक हवा से पीस ऑफ पेपर उड़ता है, वो डिस्प्लेसमेंट होती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे आ रहा है। आंटे अनलेस आप एक पेपर बॉल बना के अपने दोस्त को कस के मारो, तब तक वो डिस्टेंस ही हुई। जब कस के मारोगे तो इट विल गो स्ट्रेट, और अगर उसमें रबर बैंड में यूं रख के मारो तो कितना मजा आता है, राइट? तो वो डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सीधा जाके लगेगा। ओके, आई एम श्योर यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड द सिमिलैरिटीज एज वेल। So what are the similarities between the two? Same SI unit, शाबाश। और डिफरेंस क्या है? स्केलर एंड वेक्टर है। ये किसी भी, it can take any path, whereas displacement is going to take the shortest path between the two points, right? Okay,
छोटा सा मेरा सवाल, and then we will move on. Let's suppose you just went from your home to your school, which is 4 kilometers away. You went there, you came back. What is your total displacement? What is the total displacement? Zero. Sir, 0. Bhakhtiar said displacement is 0. Okay. Hiba. It is 8 kilometers. Sadiq. It is 4. Rawaj. आने जाने की कितनी हो गई? 4. Okay. Any other answer? हो सकते हैं ये तीनों ही wrong हो. Yeah. Kakan. 4 है चलो. Kakan ने भी 4 कह दिया. 0. Adam. 4. Aruba. Fatma. Hadia. Umar. Umandani. What do you think? You moved from your home, went to school, you came back, you covered a displacement. The displacement between the home and the school is 4 kilometers. Adi, you have changed your mind? Okay. 0. गलती बताओ कुछ नहीं होता कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा 4 ओके शाबाश ये बाकी के बच्चे सब लोग क्या ऑन करके कुछ और कर रहे हो बताओ तो सही अच्छा 0 ओके शाबाश एक बच्चे ने और 0 कह दिया हम करेंगे ऑलराइट डू यू थिंक displacement is a vector quantity going towards right side, I mean from home to school. If we are considering it positive, going from home to school is positive, then from school to home will be negative. दोनों का ऐड किया कितना हुआ? +4 -4 is equals to तो वेक्टर्स में याद है ना जब हमको वेक्टर ऐड करते थे एक वेक्टर ये बना 4 सेंटीमीटर का लेट्स सपोज और यहीं से 4 सेंटीमीटर बैकवर्ड तो कितना है कहां पर पहुंचेगी वहीं से जहां से स्टार्ट किया ठीक है तो डिस्प्लेसमेंट इज 0 व्हाट इज 8 दैट इज डिस्टेंस Distance. ठीक है बेटा in this case displacement is 0 and distance आने जाने का सारा distance that is 8 किलोमीटर याद रहेगा शाबाश तो displacement 0 क्यों है because of the opposite direction magnitude in the opposite direction you went forward and then you came back तो जिस पॉइंट से चले थे वहीं पर आप पहुंच गए हो तो that means 0 displacement ठीक है जी क्लियर आगे चले चलो स्पीड बताओ यार स्पीड क्या होगी व्हाट इज स्पीड Change of position in any direction. ओके गुड स्पीड इन्होंने बताई चेंज और व्हाट चेंज ऑफ व्हाट अभी मैं आपके रिस्पॉन्सेस लिख रहा हूं ठीक है तो Change of position in any direction. change of position in any direction शाबाश ये शाबाश Speed is distance moved per time. distance moved with time शाबाश
बोलो बोलो शाबाश बताते जो मैं लिखता जाऊंगी जिंदगी में distance covered by unit time distance covered in unit time ये सारे Distance traveled a particular time. distance traveled in a particular time. जी प्लीज और बताइए शाबाश if your answer is different from these please share it. ये चीज होती है आपकी गाड़ी में स्पीडोमीटर स्पीडोमीटर क्या बताता है स्पीड ठीक है लेट्स सपोज दिस इज द स्पीडोमीटर और मोटरवे पे जा रहे हो और ये स्पीड है I mean 120 120 पे आपकी नीडल है लेट्स सपोज 120 तो ये क्या होगा 120 किलोमीटर्स पर क्या मतलब है इस व्हाट डू यू मीन बाय दिस so if we go by this speed then we are going to cover 120 kilometers in 1 hour ऐसे ही ठीक है ना हाई स्पीड है नॉर्मल है या स्लो है मोटरवे के हिसाब से ठीक है नॉर्मली है साबित को 220 में जाना चाहिए so that means if you keep on moving with this speed we are going to cover 120 kilometers in पर का मतलब होता है यूनिट आवर यूनिट पर मींस 1 आ जाओ इसका मतलब है 120 किलोमीटर क्या है डिस्टेंस पर का क्या मतलब होता है डिवाइडेड आवर्स क्या होता है टाइम ये किसके इक्वल है स्पीड स्पीड इज इक्वल्स टू distance over time या distance covered in a unit time या distance traveled per unit time या distance traveled in a particular time या given time okay so change of position can be motion in any direction but there is no involvement of time so we have to bring in time to make it speed ठीक है बेटा so distance moved with time. Okay, agreed. Distance covered in unit time. More specific, more agreed. Distance traveled in a particular time. Same as agreed. So speed is the distance traveled in a unit time. That is the statement. This is the formula. Okay, दोनों चीजें लिखनी हैं. ठीक है बेटा whenever we are writing the definitions remember we have to write the statement होगी formal definition formal फॉर्मल डेफिनेशन वो होती है जो साइंटिस्ट ने बनाई होती है हमने नहीं बनाई होती साइंटिस्ट ने बनाई राइट रिसर्च के बाद वो स्टेटमेंट देनी उसके बाद उसका फॉर्मूला अगर है तो फॉर्मूला लेना और नहीं है तो फिर उसका सिंबल किससे वो डिनोट और फिर उसका यूनिट और यूनिट में स्टैंडर्ड इंटरनेशनल एस
I यूनिट दें, बाकी सारे यूनिट्स नहीं दें, सिर्फ SI यूनिट। ठीक है बेटा, ये 3 चीजें देना जरूरी है फॉर एनी डेफिनेशन। कहीं पे वर्ड लिखा है डिफाइन स्पीड, then you are going to give the statement of the speed, its formula and symbol, and then its unit as well. तो स्पीड किससे डिनोट होती है? S के साथ। शाबाश। So this is number 1, denoted by capital S। फॉर्मूला उसका ये है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, एंड स्पीड इज मेजर्ड इन मीटर्स। SI यूनिट ऑफ स्पीड इज meters. Kilometers, millimeters, centimeters, they are not the SI units. They are the units, but they are not the SI units. ठीक हो गया बेटा? स्पीड समझ में आ गया? What is velocity? The rate of change of displacement. शाबाश। सिर्फ distance की जगह पे we are going to replace displacement. Meters per second. Times to something more. All right. So displacement traveled in a particular time, that is called velocity. It is denoted by V. Formula क्या है इसका? शाबाश। Meters per second is the SI unit for velocity. Speed और velocity में क्या फर्क है? हाँ हाँ। शाबाश। वही डिफरेंस जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में था, वो ये वेलोसिटी है स्पीड में। बाकी सारी चीजें सेम। ओके, चलो शाबाश। जल्दी से लिख लो। If you got any questions, so ask me. Otherwise, we are moving on to another term which is called acceleration, which is slightly garbage. Okay. Sir, can you repeat what you explained when you wrote the definition of velocity? I actually disconnected. Definition of what? Speed and velocity. I'm asking, can you repeat whatever you explained after writing the heading of velocity? I actually disconnected. All right. Speed is distance traveled in a particular time. ठीक है ना? And velocity is displacement covered in a particular time. Okay, there is no big difference between speed and velocity. The only difference is instead of distance, for velocity we use the word displacement. Okay? This Yes. one? समझ आ रहा है बेटा? Or Yes. repeat it with some examples. Can you repeat with some examples? Sure, I can. All right. Let's suppose you are moving on the motorway. Are you observing speed or velocity?
G. Your meter is telling your velocity or it is telling your speed? Motorway is very straight or it is slightly curved somewhere? Yes. So can you just travel from Lahore to Islamabad right in one direction? No. So is that the velocity or speed? Because the direction of your distance is changing. So it is not displacement, it is distance. So when we have distance, we cannot call it velocity. All right. So if an aeroplane is going straight from Karachi to New York, straight in the air, it is traveling displacement or distance. So we can call it, yes, speed as in a particular direction. So that is velocity. Instead of speedometer, we got a velocity meter as well. ठीक है बेटा? चलो, जो लोग बड़े बोर हो रहे हैं ना, उनके लिए एक क्वेश्चन है। जो समझ रहे हैं वो हमें तो स्पीड वेलोसिटी बड़ी समझ नहीं आ रही है। उनके लिए my question is कि a person is riding in a मौत का कुआं, मोटरसाइकिल चला रहा है या गाड़ी चला रहा है इसके अंदर, और उसकी जो है वो है 100 किलोमीटर पर आवर। ये 100 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है या वेलोसिटी है? People they are saying speed. Okay, मैं लिख देता हूँ ना तो आप यहाँ पे समझ रहे हैं। You are saying it is speed. Okay, for velocity का उम्मीद हो? Anybody thinks it's velocity? It is not changing. And just going round and round. मौत का कुआं देखा? I guess velocity is sir. All right. कोई लोगों का ख्याल है वेलोसिटी भी हो सकती है। बेटा क्यों वेलोसिटी हो सकती है बताओ इनको। देखो at least she got the courage to disagree with the entire class. Excellent for that. Now, why you think so? Share that also. सर क्योंकि स्पीड ऊपर नीचे होती रहती है और वेलोसिटी आई गेस नहीं चेंज नहीं होती। Yes. वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है, ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी का एक और एलिमेंट भी है, अदर देन मैग्नीट्यूड उसकी डायरेक्शन भी होती है। इस वक्त इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? अप डायरेक्शन किधर है? और इस पॉइंट पे डायरेक्शन, और यहां पर डोंट यू थिंक उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है विद इट्स मोशन? सो इट इज नॉट वेलोसिटी. Although the magnitude is constant, it is 100 kilometers per hour, but the direction is changing. Every moment the direction is changing. So whenever direction change, it is not velocity, it is speed. Okay? जी बेटा समझ में आ रहा है उनको नहीं? फातिमा, हादिया, उस्मान एंड खदीजा, I'm sure काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। Yes, sir. All right, शाबाश, गुड। आओ जी आगे चलते हैं। Let's suppose दो मोटरिस्ट हैं, दोनों की रेस लग गई। This is the starting point, the starting line. A, B, तो जी पहले लाइन क्रॉस की A ने, ठीक है, दोनों में से किसी एक ने करनी, B ने बाद में की। They were at rest. At rest.
and this was a straight path, straight line, bilkul straight. At rest, what was the velocity? Zero. Why velocity is zero? They are not moving. ठीक है ना? They are at rest, therefore their velocity is zero. अच्छा जी, when at this finishing line, यहाँ पर ये सादिक ने ना कैमरा लगाया हुआ है, बहुत ही जबरदस्त किस्म का DSL कैमरा, जूम करके, हाँ, हाई स्पीड, और उसने देखा कि this velocity of this A motorcyclist was 275 kilometers per hour. उड़ता ही जा रहा है। और B की कितनी थी? B lost the race. B की कितनी हुई? Already 250 kilometers per hour. ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी में फर्क है। वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, शाबाश, who is this? तो इस वेलोसिटी को क्या कहें? इनिशियल वेलोसिटी। पक्का? चलो क्या है? इनिशियल मीन्स when we start observing that, तो उस वक्त उनकी initial velocity that was zero, और जैसे रेस स्टार्ट हुई उनकी velocity change हुई, and after some time their velocity became this much. What do we call this velocity as? Final velocity. शाबाश। ठीक है, initial और final समझ आ रही? All right. Beta, initial velocity is denoted by u. Symbol for initial velocity is u, and for final velocity is v. ठीक हो गया? Let's suppose इनको लगे 50 seconds to complete the race. Time 50 seconds. 50 seconds में race खत्म. Right? You think कि velocity में कोई change आया था? Initial velocity was, final was, so there was a change. So change in velocity with respect to time, change in velocity per unit time. This is called acceleration. शाबाश। ठीक है? Acceleration means change in velocity divided by time. So the acceleration, right? अब इसकी formal statement क्या है? Acceleration. Acceleration is the rate of change of velocity ठीक है बेटा? Acceleration is the rate of change of velocity. रेट, कहीं पर भी डेफिनेशन में वर्ड रेट आए, रेट का क्या मतलब है? रेट का मतलब है डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है? रेट एक टेक्निकल वर्ड है, जैसे आप कहते हैं सम ऑफ टू क्वांटिटीज, तो सम का क्या मतलब होएगा?
प्लस इसी तरह से रेट का क्या मतलब है, डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, आगे बहुत सारी डेफिनेशन रहेंगी जिनमें ये वर्ड यूज होएगा, मैं आपसे पूछूंगा फिर मुझे बताना है, आपने भूलना नहीं। ओके, रेट का क्या मतलब है, शाबाश, रेट हो गया। चेंज का क्या मतलब है, चेंज, चेंज का मतलब होता है जब आप किसी शॉप पे जाते हो, आपने 1000 रुपीज का नोट दिया, आपने एक चॉकलेट खरीदी एंड यू गेट अ चेंज इन रिटर्न। व्हाट इज चेंज? चॉकलेट की 500 रुपीज की 600 की बदली महंगी बनी, ठीक है, कितना चेंज वापस मिलेगा? तो क्या किया आपने, प्लस किया या माइनस किया? तो चेंज में क्या करते हैं, माइनस। इट इज एक्चुअली द डिफरेंस, चेंज डिफरेंस, और वो आता है माइनस से। तो चेंज मीन्स माइनस, सब्ट्रैक्ट, और इसका सिंबल क्या है, डेल्टा। ठीक है, चेंज मीन्स डिफरेंस या सब्ट्रैक्ट। किससे डिनोट होता है, डेल्टा। ये दो चीजें याद रखनी है। और जरा गौर से इस डेफिनेशन को देखो, एक्सेलरेशन इज, मैं लिख रहा हूं यहां पे ब्लू के साथ, एक्सेलरेशन इज इक्वल व्हाट, रेट ऑफ, रेट का क्या मतलब है, डिवाइड करें किसके साथ, टाइम के साथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज किससे डिनोट करेंगे, चेंज ऑफ व्हाट, वेलोसिटी। दिस इज एक्सेलरेशन, फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, हमने इसके डेफिनेशन में से इसको डिराइव किया। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। ठीक है, ये लिख लो। फिर मैं यहां पर आपसे पूछूंगा चेंज इन वेलोसिटी कितनी थी, बताइए चेंज इन वेलोसिटी ऑफ दीज टू रेसर्स, हाउ यू आर गोइंग टू डिटरमिन दैट, डेल्टा v इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, v माइनस u। शाबाश, वेरी गुड। कितना हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, a की क्या होगी, 275 minus 0. Okay, so this is what change in velocity. लिख तो इसकी जगह पे 275 minus 0 क्या होगा, 270। टाइम 50 seconds divided by 50, 5.5. 5.5 meters per, velocity का क्या यूनिट है, देखो सब बॉस, व्हाट इज द यूनिट फॉर वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड। मैं इसको रेट से लिखूंगा ताकि आपको याद हो। यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर्स पर सेकंड, डिवाइडेड बाय टाइम मींस Sir, not change the time 50 seconds into kilo hours because the velocity is 275 kilometer per hour. वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर्स पर सेकंड, डिवाइडेड बाय टाइम मींस सेकंड। तो जब ये डबल डिवीजन होएगी तो व्हाट विल बी द यूनिट फॉर एक्सेलरेशन, मीटर्स पर सेकंड। Okay, that is the unit for acceleration. So this is the formal statement. Formula for that acceleration is a is equals to delta v over time, and unit of acceleration is meters per second square. Any questions? No, sir. जी, कोई बच्चा बड़ा पैशनेट होगी, कोई क्वेश्चन कर रहा था, सॉरी आई कुडंट गेट दैट, कैन यू प्लीज कम अप अगेन? So we will not convert the time seconds into hours.
What is the SI unit of time? Seconds. Thank you very much. तो यहाँ पे 50 seconds थे. हमने as it is 50 seconds देखा. If ये वाला सादिक तो नहीं बताया तुमने किलोमीटर्स पर आवर हमने कन्वर्ट करना था. ठीक है? So हम इसको किलोमीटर्स पर सेकंड ले लेते हैं. Excellent. Who is this? कौन बचा था ये? फातिमा और हादिया. Hadia. Hadia, excellent, Hadia. You better start for it. Yes, we have to keep the units same. So A was moving with the velocity of 275 meters per second. All right. So अब ठीक हो गया बेटा? Yes, sir. Good. Thank you very much. Thank you for the correction. ठीक है जी? So we have to keep the same units throughout. अगर kilometers per hour है, we need to convert it into meters per second. All right. So it's good to consider SI units rather than the other units. Okay. So we have just discussed about distance, displacement, speed, velocity, and acceleration. All right. आज के लिए इतना ही काम. कल हम start करेंगे. Okay. Thank you very much. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz, beta. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz, beta. Allah Hafiz.